Motion, right? We will talk about the speed, define speed as distance traveled per unit time, and define velocity as change in displacement per unit time. Right? We will talk that speed is distance over time. But before that, I'm going to tell you what is distance. We'll talk about the average speed, and the average speed is total distance traveled over total time taken. We will also talk about acceleration, and we will see that the acceleration is change in velocity over time. We will talk about the examples of uniform acceleration and non-uniform acceleration. We will also state that the deceleration is a negative acceleration, and we will use that in calculations. Deceleration. We will sketch, plot, and interpret distance time graphs and speed time graphs. We'll talk about how the shape of the distance time graph determines when it is at rest, at constant speed, accelerating, decelerating. We'll also talk about the shape of a speed time graph when an object is at rest, moving with a constant speed, moving with a constant acceleration, and so on, right? We'll also see that how the acceleration of free fall for an object near the Earth's surface is 9.8. We will calculate the speed from the gradient of distance time graph. And we'll also talk about speed time graph to determine the distance traveled and acceleration from the gradient of speed time graph. So this is what kinematics is all about. This is all kinematics. Okay, so let us begin kinematics. Let's make it your favorite chapter. And what is kinematics? First of all, I'm going to talk about the distance. And what is distance? It is the length traveled by a particle. Because without considering the direction. Because we are not considering the direction. SI unit is meter and distance is a scalar. Okay, it's a scalar. मतलब आप किसी भी जगह जा रहे हैं, let's say you're going like this or you're going like this, ठीक है? मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ. आप कुछ distance ही cover करेंगे, इस तरह चले जाएं, ठीक है? Whatever, it's the distance. But there's another thing that we call displacement. And what is displacement? It is the distance moved in a specified direction. It is a distance moved in a specified direction. SI units are meter. ठीक है, इसकी definition आपने ये नहीं लिखनी कि it is the shortest distance. आपने लिखना है कि it is the distance moved in a specified direction. And displacement is a vector. ठीक है, it is a vector. I have here the object which goes from here to here, comes here, for example. It covered a distance of 5 meter here and a distance of 2 meter here. Okay, तो आप मुझे बताएं कि इसका total distance traveled कितना है? Yes, 7 meter. Total distance traveled is 7 meters. 7.0 meters, right? And if we talk about displacement, what about that? 3 meters. देखिए, start point से लेके ending point तक जो distance है उसको हम displacement कहते हैं. मतलब ये इसकी displacement यहां से लेके यहां तक 5 minus 2 हो जाएगी, क्योंकि वो वापस आ गया, वो अभी वापस आ गया. So 5 minus 2 is 3 meters. That is the displacement. The displacement is 3. If, however, it started from the starting point like this and it went all the way like this and it came here. It went 8 meters here. It came back 8 meters here. What is the distance traveled? 16 meters. What is the displacement? 0 meters. It came back to its original position, you see, because its displacement 0 है, लेकिन इसका distance 16 है. There is a difference, ठीक है? और इसी तरह से अगर एक object जाता है, for example,
ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये यहाँ से होके ऑल द वे इट वेंट हियर, दिस वाज 5 मीटर, यहाँ तक 5 मीटर था, दिस वाज 3 मीटर्स। तो इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 13 meters and the displacement is -3। जीरो से उस तरफ चला गया, मतलब जीरो से उस तरफ पॉजिटिव है, जीरो से उस तरफ नेगेटिव। तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इस तरह से जा सकता था ऑल द वे, तो ये इसने डिस्टेंस कवर किया, बट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्ट, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड के बारे में, राइट। सो व्हाट इज स्पीड? यू शुड नो that speed is the distance traveled per unit time, or it is the rate of distance, or it is the rate of change of distance. Because we can write here speed as distance over time, and this is in meters, and this is in seconds. So SI units are meter per second. You should also know that speed is a scalar, which means that इसमें कोई डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार हियर and this car is traveling towards right or left. This is left, this is 40 meter per second, this is right, this is 25 meter per second. तो हम लोगों को don't know about its direction. The direction is not important because it is the speed. Okay, so speed is a scalar. Then we have velocity. What is velocity? It is defined as the change in displacement per unit time, or it is the rate of change of displacement. Velocity को हम लिख सकते हैं as change in displacement over time. This is in meters, this is in seconds. So this is meter per second. ठीक है जी? SI units are meter per second, and I already told you that speed with direction gives you the velocity. And you should know that velocity is a vector. ठीक है जी? तो velocity जो होती है वो स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं मेरे पास ये कार जा रही है और इसकी स्पीड थी 25 मीटर पर सेकेंड, और साथ में बता दो टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये असल में वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज द defined as the change in displacement per unit time, or it is the rate of change of displacement, and it's a vector. या आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। We have average speed. What is average speed? You should know that average speed is the total distance traveled over total time taken. And you can write here the average speed as total distance over total time. इसका मतलब ये है कि for example you're going from A to B, and then you're going from B to C, and then you're going from C to D. And for example you had 20 meter here, the time was 1 second from A to B. Then 30 meters here, time was 5 seconds. Here we had a rest of 5 seconds. And this is 10-meter distance with a time of 2 seconds. So how can we find the average speed? If you add all of these distances, तो आपको रेस्ट टाइम भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। रेस्ट टाइम इसलिए इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि टोटल जर्नी की बात हो रही है। ठीक है, अगर ये एरोप्लेन होता और वो कहता है कि ओनली द एवरेज स्पीड व्हेन फ्लाइंग, तब आपके पास अगर कोई एरोप्लेन किसी एयरपोर्ट पे रुका हुआ है तो उसको टाइम को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है सिर्फ। लेकिन यहाँ पे जब आपके पास कोई कार जा रही है और वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आपको रेस्ट टाइम भी इंक्लूड करना। सो टोटल डिस्टेंस इज 20 प्लस 30 प्लस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1
प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 60/13, विच इज 4.62 मीटर पर सेकेंड। दिस इज नोन एज द एवरेज स्पीड। फिर यहाँ पे 2 सेकेंड्स जो उसने टाइम लिया, तो एवरेज स्पीड इज 4.62 मीटर पर सेकेंड। दिस इज नोन एज द एवरेज स्पीड। अगर प्लेन फ्लाई कर रहा है तो आप सिर्फ उसका रेस्ट टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे। आई एम गोना राइट हियर दैट व्हेन अ प्लेन इज फ्लाइंग, ठीक है, ओनली देन वी टेक फ्लाइंग टाइम एंड नॉट द रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम इंक्लूड एंड द रेस्ट टाइम इज नॉट इंक्लूड। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको कन्वर्ट करना है, अच्छा आप लोग आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स और स्पीड टाइम ग्राफ्स और डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो आपको स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, अभी हम पढ़ेंगे वो। इट गिव्स यू द डिस्टेंस। हम उसे देखेंगे, राइट। तो उससे भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस टोटल एरिया निकाल के टाइम से डिवाइड करें तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अभी वील डू इट, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन आपने करनी है, कन्वर्जन फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। हाउ विल यू कन्वर्ट 1 meter per second into kilometer per hour? If you have 1 meter in 1 second and you want to convert it into kilometer per hour, what will be the strategy? देखिए 1 मीटर जो होता है वो 1000 मीटर 1 किलोमीटर बनाता है। तो आप इसको किलोमीटर में करने के लिए से 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब 1 मीटर इज 1/1000 किलोमीटर। एंड 1 सेकेंड में जो है अगर आप आर में करें तो व्हाट यू डू इज, वन को आप एक आवर में 60 सेकेंड 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट्स में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। सो 60 × 60, मतलब 1 आवर में इतने सेकेंड होते हैं। ठीक है, सो दिस विल बिकम 1/1000 divided by 1/3600. This will be 1/1000 multiplied by 3600. इसका मतलब है कि 3600 ओवर, आप इसको जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 kilometers per hour. So if you need to convert 20 meter per second into kilometer per hour, what you will do is you will multiply 20 with 3.6, because one meter per second is equal to, इस तरह से आप इसको convert कर सकते हैं। And also if you convert kilometer per hour into meter per second, then for example you have 100 kilometers per hour and you want to convert it into meter per second. तो 100 किलोमीटर और इन 1 आवर, तो आप 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो once you do the maths, your answer will be what? 27.8 meter per second. So this is how you will convert kilometer per hour into meter per second, right? इस तरह से आप इसको करेंगे। एक आध क्वेश्चन आपको अभी करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जरा ट्राई करें। वैसे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हमने करना है, लेकिन आपके सामने डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टोटल टाइम भी दिया हुआ है। तो शी टेक्स, द साइक्लिस्ट takes a ride lasting 25 seconds and 150 meter is, yes, 150 meter is the total distance. So 150 को आप 25 पे डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। 150 टोटल डिस्टेंस है, टाइम 25 है, 6, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 जरा करें। A lorry takes 15 minutes to travel along the path PQRS. What is the average speed of the lorry? And what would be the answer? D आंसर है, D। आपने मिनट्स को आवर्स में भी करना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया होगा। You will have 15/60. This is 0.25 hours, right? And average speed is total distance over total time. So this is 8 plus 3 plus 5 as a total distance.
and total time is 0.25, and once you do the maths you'll get the answer as b, right? और अब हम चलते हैं towards the acceleration. उसके काफी questions हैं, ये भी आप कर सकते हैं. A car takes 1 hour to travel 100 kilometers along a main road, and then then half an hour to travel 20 kilometers along a side road. What is the average speed of the car for the whole journey? मेन रोड पे 100 किलोमीटर 1 आवर के लिए गया है, और साइड रोड पे 20 किलोमीटर गया है फॉर, ओके लेट्स सी, total distance is 100 plus 20, so that is 120 kilometers, and total time is 1.5 hour. तो आप total distance over total time कर लें, your answer will be 120 over 1.5 is 80, right? ठीक है जी, इस तरह से आप लोगों ने इसको कर, ठीक है. ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सेलरेशन. फिर जब हम ये सारा कर लेंगे तो आई विल आल्सो मेक यू डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम P2 as well. अच्छा जी, as far as the acceleration is concerned, you should know that your car has an accelerator, right? So if you when you press the accelerator, its speed increases and increases and increases, right? So what is acceleration? For example, there was a car, it had an initial velocity, let's say it was moving at an initial velocity 10 meter per second. This is initial velocity, and it went to a final velocity v. Let's say this was 35 meter per second, and this is the final velocity. It went from this. This entire thing occurred in a time of, let's say, 5 seconds. Let's say, right? The change in time. This fancy symbol that you see here is the change in time, delta t. So acceleration will be final velocity minus initial velocity over time interval. We sometimes write it like this: acceleration as the change in velocity over time. You can also write it like this: a is equal to v minus u over delta t. So if you solve this equation, this will be 35 minus 10 over 5, which will give you 25 over 5. That's 5 meter per second square. And this is what we call the acceleration. Okay? SI units for acceleration or meter per second square. So if they ask you the definition, define acceleration, you write that it is the change in velocity per unit time, or you can also write it is the rate of change of velocity. The SI units are meter per second square, right? As you can see here. Different किस्म की accelerations होती हैं, हम उनको देखेंगे. Zero acceleration भी होती है, decreasing acceleration, increasing deceleration. There are various types of acceleration, right? So I'm going to write here different types of acceleration, but before that, let's do a question which is based on this. An object moves from P to Q in time 10 seconds with uniform acceleration. Constant acceleration. Velocity at P is 5, velocity at Q is 12. What is the acceleration? Simple question. A is equal to V minus U over T. V is 12. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. डेल्टा टी भी आप लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं. 12 minus 5 over 10, this will be 0.7. ये आपको फॉर्मूला अगर याद है तो you will do wonders, right? A student measures the speed of the trolley. At one instant, speed of the trolley is 1 meter per second, and 2 seconds later, the speed is 4. What is the acceleration of the trolley? V is 4. This is 1. The time taken is 2. So 3 over 2 is 1.5. Acceleration आपने ऐसे निकालनी है, right? So different types of acceleration. एक होती है zero acceleration. ठीक है? Zero acceleration में क्या होता है? It's constant velocity. It is constant velocity, right? The velocity is not changing. So there is a car here, and the initial velocity was 10. The final velocity is also 10.
It's moving at a constant velocity all the way. So acceleration is v minus u over t. This is 10 minus 10, and let's say the time is whatever, right? The answer is 0. So whenever we have constant velocity, acceleration is 0. Number 2 is increasing acceleration. So we have here, let's say a car which had initial velocity 10, the final velocity was 15, the time was 1 second. So acceleration is 15 minus 10 over 1, which is 5. If, however, the initial velocity goes from 15 to 25, right? This is 25 and the time is 1 second. So A is V minus U over T. So this is 25 minus 15 over 1, which is 10 meter per second square. तो आप देखें क्या हुआ है, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन पहले से ज्यादा हो गई, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको करेंगे.